Hello and welcome to E-Classroom of English with Harpreet Kaur. So today in our English period we are going to read about grammar. Yes, active and passive voice. So let's understand what is active and passive voice. So let's get started. Firstly, we'll read the following sentences. The gardener waters the plant. The plants are watered by the gardener. So girls, can you see the contrast in these two sentences? कुछ तो भी difference है या are they same? Yes, the meaning is same but the construction is different. That is called as, this contrast is called as voice. In the first sentence, the gardener watered the plant, it is an active voice. And in the second sentence, the plants are watered by the gardener, it is in passive voice. Why? Because in first sentence the subject is performing the action, gardener ने water किया है plant को. But in the second sentence the subject of the verb is acted upon. See, plants are watered by the gardener. पौधों को पानी किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है. So subject is coming in the end, the positions are changed. So hope it is clear what is active and what is passive voice. Let us see it in detail now. There are some rules when we change some sentences from active voice to passive voice. Let us see some common rules. Basically we have the rules as per the tenses. We have done tenses already in our previous video. So there are some rules which are commonly followed in all kinds of tenses, whether it is present, past, or future, or any other further division. But the common rules are, the subject becomes the object of the sentence and the object becomes the subject of the sentence. Second important thing is, the tense will remain the same. If it is in simple present, the sentence will, the passive voice will also be in simple present. Third important rule is, the verb, जो भी verb होगा, that will always be in third form. That will always be the past participle of the verb of that finite verb. Okay, कभी भी कोई और form नहीं आएगा. It will always be V3, verb third form. Next important thing you have to keep in mind is, preposition by always come after the verb third form. Verb की third form and then by. उसके बाद last में there will be the object. Hope it is clear. Now there are some changes in the pronouns also. The conversion of pronouns are as follows. When it in active voice it is I, in passive it becomes me. In active it is we, it becomes us. You remain same in both active and passive voice. He becomes him, she becomes her, and it always remains same in active and passive. They becomes them. Now let us study as per the tenses. So what is the first tense in present? Yes, simple present tense, or you can say it as present indefinite tense. क्या rule होता है active voice में? How will you recognize whether a tense is active in active voice is simple present? Yes, subject के साथ verb की base form and then if SES required है तो वो plus the object. But when we change such sentence into passive voice, what is the structure? Firstly, we will interchange the subject and the object, and then is MR. And you will use is MR. Is MR किसके बेस पे यूज़ करेंगे? Now the new subject, जो हमने अब नया subject बनाया. That means active voice में वो object था. Now it has become subject. Okay, and then is MR. Depending upon that, if it is singular, use is. If it is I, use am. If it is plural, then use are. Then verb की third form, as I told you, always the third form is there, past participle, and then preposition by, and then at the end will be the object. Firstly, we will see some examples, and all your confusions and doubts which are coming in your mind now, that will be clear. Mohan writes a book. Mohan is the subject, book is the object. Now interchange the positions. A book को हम subject बना देते हैं. A book, and Mohan will be at the last place because it will become object. A book. A book is singular, so I will use is, am, or are. What I will use? Is. A book is. Now the third form of write. Written. A book is written. किसने लिखी है? By Mohan. Clear? One more example we will see. They do not follow the teachers. ठीक है, द टीचर्स नाउ विल कम फॉरवर्ड. द टीचर्स, अब वो प्लूरल है. द टू टीचर्स के साथ आई विल राइट आर. द टीचर्स आर नॉट. हियर वी हैव अ नेगेटिव सेंटेंस, तो आर के बाद मुझे नॉट भी लगाना पड़ेगा. द टीचर्स आर नॉट. नाउ फॉलो का थर्ड फॉर्म इज फॉलोड. आर नॉट फॉलोड बाय देम. इफ़ वी सी सम इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल, अगर हम कोई किसी क्वेश्चन वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं, लेट अस सी हाउ वी विल डू इट. डू यू सी दैट बर्ड? Which is the object? Bird is the object. That bird, वो वाला word.
एंड सब्जेक्ट यू है, बट यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, डू से स्टार्ट हुआ था. सो अब मेरा जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड. दैट वर्ड तो फॉरवर्ड आएगा ही आएगा बिकॉज इट इज़ ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाएगा. बट दैट वर्ड सिंगुलर है, सो फॉर दैट आई विल यूज इज. सिंगुलर है, इज है मार्क, इसमें से मैं इज यूज करूँगी. सो इज दैट बर्ड सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ सी, सीन, seen by you, question mark. So hope it is clear how to change the present indefinite sentences from active to passive. Now we will see present continuous tense. How will we recognize a sentence in active voice it is present continuous? Yes, is है मार के साथ verb की first form and then ing, like dancing, cooking, going, coming and so on. So how will we change them into passive? Simple as the simple present tense. Yes, we will just add being. वही structure है same जो previous था. Subject is am are, verb की third form, by plus object. एक word extra add क्या हो गया है? Being. Because being means continuation में है. Let us see through the examples. The boys are playing cricket. ठीक है, what are the boys playing? Cricket. So cricket will come forward. Cricket now is singular or plural? Singular. So cricket is, it is continuous tense, so मैं being लगाऊंगी. Cricket is being. What is the third form of playing? Played. Play form था ना basic, so played. Cricket is being played by the boys. People are destroying forests. क्या destroy कर रहे हैं? Forest. तो forest हम start करेंगे. Forest plural है, forests are being. Always remember continuous tense है, we have to add being. Forests are being destroyed. Third form of destroy is destroyed. By whom it is destroyed? By people, क्योंकि subject people था. Clear. To change the present continuous tense we have to add is mr के बाद we have to add being and then verb की third form with by and the object. Now talking about present perfect tense. In present perfect tense how will you recognize a tense in active voice? सब्जेक्ट के बाद क्या होता है हमेशा? यस, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट. बट व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस व्हाट वी विल डू? सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, और वो हैज़ हैव किसके अकॉर्डिंग होगा? यस, डिपेंडिंग अपॉन द न्यू सब्जेक्ट. प्लस यहाँ पर वी हैव टू ऐड बी डबल ई एंड बीन. सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, then obviously हमेशा की तरह we will use past participle, that is the verb third form, by and then the object. Don't get confused. Let us see the examples. The police has caught the robber. The robber हम start करेंगे sentence, the police last में ले जाएंगे. ठीक है, the robber is singular, so what I will use? Has or have? Has. Yes, very good, you are getting it. The robber has. Now been. परफेक्ट टेंसेज में हमेशा बीन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, बीन इज ऑलवेज देयर. ठीक है, द रॉबर हैज़ बीन. अब कॉट ऑलवेज, ऑलरेडी वी हैव द थर्ड फॉर्म कॉट. कॉट बाय द पुलिस क्यों आ गया लास्ट में? बिकॉज वो सब्जेक्ट था, नाउ इट विल बिकम ऑब्जेक्ट. द टाइपिस्ट हैज़ टाइप्ड 4 लेटर्स. 4 लेटर्स हैव बीन. अब ये हैव बीन क्यों हो गया? बिकॉज टाइपिस्ट के साथ हैज़ था, बिकॉज टाइपिस्ट वो सिंगुलर. नाउ 4 लेटर्स इज द सब्जेक्ट, 4 लेटर्स इज प्लूरल, हेंस वी विल यूज हैव. 4 letters have been typed by the typist. Now talking about past indefinite tense, how we recognize past indefinite tense or simple past? Yes, subject, then the second form of the verb and then the object. How we make it as past passive voice? Yes, subject plus was were plus verb की third form plus by and then the object. जैसे पहले is am are था simple present में, but ये past है तो was were हो जाएगा. So let us see through the given examples also. The carpenter made chairs. ठीक है, डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मेड, तो दैट इज सिंपल पास्ट. सो नाउ वी विल चेंज इट इनटू पैसिव. चेयर्स, अब चेयर्स प्लूरल है, सो व्हाट आई विल यूज? वॉज या वर? यस, वर. चेयर्स वर, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेड, वर मेड बाय द कारपेंटर. द हंटर किल्ड अ लायन. सो अ लायन से स्टार्ट करेंगे. अ लायन, इट इज सिंगुलर, सो आई विल राइट वॉज. A lion was killed. Again the third form is killed by the hunter. So hope this rule is also clear that after subject was and were will be added whatever required and then verb ka third form plus by followed by the object. Now talking past continuous tense. Past continuous कैसे पहचानते हैं हम? How we recognize? Subject plus was were and ing verb plus object, like he was cooking, he was looking at the picture, they were not sucking mangoes and so on.
And when we make it passive voice, as I told you earlier, being, BEING, being ऐड करना definite है हमारे लिए. So subject plus was verb plus being plus verb की third form and then by an object. For example, he was looking at the picture. So the picture से start करेंगे. The picture singular है, so was आ जाएगा. The picture was being word forget नहीं करना है. The picture was being looked at. लुकड एट क्यों आया है? बिकॉज लुक का थर्ड फॉर्म होता है लुक्ड एंड एट प्रपोजिशन वहाँ पर गिवन है, सो वी कैन नॉट लीव इट. सो एट एंड देन बाय किसने किया था? ही का बन जाएगा आपका हिम. आई टोल्ड यू द कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन. शी वॉज टीजिंग हर फ्रेंड. हर फ्रेंड से स्टार्ट करेंगे. हर फ्रेंड सिंगुलर है. हर फ्रेंड वॉज बीइंग टीज्ड बाय शी मतलब हर. दे वर नॉट सकिंग मैंगोज. मैंगोज प्लूरल है, सो इट विल हैव वर. मैंगोज वर नॉट बीइंग. नॉट क्यों आया? बिकॉज इट वॉज अ नेगेटिव सेंटेंस. मैंगोज वर नॉट बीइंग sucked. थर्ड फॉर्म इज sucked by them. So hope the rule for past continuous tense is also clear to you. Always remember the word being. Now talking about past perfect tense. How we recognize past perfect tense, girls? Subject के साथ had, then verb की third form, and then the object. Like I had completed the assignment, the police had caught the robber, the typist had typed 4 letters, and so on. But when we change it into passive, been add करना है आपको. Subject plus had plus been plus verb का third form, then by and then object. Like if the police had caught the robber से start करेंगे. The robber had been. PEEN. Don't mix it with continuous tense. Continuous में क्या था? BEING, being. The robber had been caught by the police. Third form already है आपके पास. The typist had typed 4 letters. 4 letters had been typed by the typist. Clear? Now future indefinite, या you can say simple future. एक्टिव वॉइस कैसे पहचानते हैं हम लोग? नॉर्मल टेंसेस. सब्जेक्ट विल शैल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. लाइक ही विल फिनिश दिस वर्क, आई शैल पेंट द डोर, द प्यून विल ब्रिंग द टी एंड सो ऑन. सो व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, विल शैल के बाद वी हैव टू ऐड बी and then third form of the verb and by an object. If I say he will finish this work, so यहाँ पर this work will come forward, this work, and then future tense है तो हम will लगाएंगे. This work will, then be, this work will be. Third form of finish, finished. This work will be finished by. He का क्या बनेगा? Him. This work will be finished by him. The peon will bring tea. Tea will be ब्रॉट. थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रिंग का. ब्रॉट. विल बी ज़रूर लगाना है क्योंकि सिंपल फ्यूचर है. टी विल बी ब्रॉट बाय. किस कौन लाएगा? पियून. तो बाय द पियून. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों टेंसेस देखेंगे. एक्टिव में क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट में? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट. बट व्हेन वी मेक इट पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन. यस, हैव फ्यूचर में हमेशा सिर्फ हैव रहता है, हैज़ नहीं आता. हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक इफ़ आई से वी विल हैव मेड अ टेबल, हम टेबल लगा चुके होंगे. वी विल हैव मेड अ टेबल. सो व्हाट आई विल डू? अ टेबल एज यूजुअल, ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले आऊँगी. अ टेबल. विल हैव डेफिनेटली लगेगा, फ्यूचर है. नाउ व्हाट वर्ड वी हैव टू ऐड? परफेक्ट में हमेशा मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर. बीन. ठीक है. अ टेबल विल हैव बीन मेड. थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेड बाय अस. ठीक है. वी का क्या बनता है? अस. आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय 7 PM. माई वर्क शैल हैव बीन, या सॉरी विल हैव बीन completed by 7 PM. You will have taken this box. This box से start करेंगे. This box will have been taken by you. And always remember there is no future continuous tense. मतलब future continuous tense का passive voice नहीं होता है. And neither there is the passive voice of any perfect continuous. Present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. They don't have passive voice. Now talking about imperative sentences. Firstly, we must know what are imperatives. Imperatives mean sentences having request, order, command, suggestions, advice. For example, please help me, don't shout, get out of my room, and so on.
These all are sentences having order, request and suggestions. So what we do to change them into passive voice, there are two ways for changing them. First, we can make the structure of let. Suppose we don't know whether it is an order, request or suggestion. So what we will do, we'll start the structure with let plus subject plus be plus past participle. For example, do this work. ठीक है, what is the subject? You, क्योंकि hidden होता है इसमें subject. I told you earlier also when we studied sentences, imperative sentences में subject hidden होता है you. एंड ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस वर्क. सो दिस वर्क से स्टार्ट होना है वर्क, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर है इम्पेरेटिव का. सो लेट से स्टार्ट करेंगे. लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जो भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है. लेट दिस वर्क एंड देन व्हाट आई टोल्ड यू, बी ई बी. लेट दिस वर्क बी, थर्ड फॉर्म ऑफ डू, डन. लेट दिस वर्क बी डन बाय यू. ठीक है, hope it is clear. Now if we are clearly knowing that a sentence is a request, for example a sentence begins with please or kindly, like please come here, kindly help me. आपको clearly पता है there is a request, so you will begin such sentences with you are requested to, you are ordered to, you are advised to, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ एडवांस में. See the example, kindly help me, you are requested to help me. ऑलरेडी काइंडली का हमने रिक्वेस्टेड बना दिया है, सो यू विल नॉट रिपीट द वर्ड काइंडली. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. अब सपोज इफ़ यू नो दैट इट इज़ एन ऑर्डर और इट इज़ एन एडवाइस, देन व्हाट यू विल डू. सपोज द डॉक्टर इज एडवाइजिंग, या फिर सम फ्रेंड इज एडवाइजिंग यू टू गो टू अ डॉक्टर. कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलो. सो देर इज़ एन एडवाइस, योर फ्रेंड इज एडवाइजिंग यू कि तुम्हें तो कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, जस्ट गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर. सो यू आर एडवाइज्ड टू. यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड, अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू, अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू. सो यहाँ पे एडवाइस था, यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस. ठीक है, गेट आउट, फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट. सपोज यहाँ पे होता है डोंट शाउट. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है. सो व्हाट यू विल डू, यू आर ऑर्डर्ड. यस, यू आर ऑर्डर्ड. अब ये नेगेटिव था तो टू नहीं लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट नॉट टू. यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गेट शाउट, नॉट टू शाउट. Clear how to change the imperative sentences. Now we talk about modals. When there are modals given in the sentence, what you have to do, students? Modals, what are they? Can, may, must, है ना. If they are in the sentence, what you have to do? Suppose there is can do, it will become can be done. Should have done, should have been done. Would do, would be done. Ought to do, ought to be done. Might have done, must have been done. See examples also. Sentence examples will make you more clear. I can do this sum. ठीक है, I can do this sum. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है I can do this sum. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? this sum. So start with this sum. This sum, मैंने ऊपर देखिए क्या बताया था, can do क्या बन जाता है? can be done. This sum can be done by, by तो लगाना ही है लास्ट में, और I का क्या बन जाएगा? me. This sum can be done by me. You should have done this sum. आपको ये sum कर लेना चाहिए था. So what you will do? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं. चलिए, this sum should have been done. सी ऊपर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था, should have done क्या बन जाता है? should have been done. So this sum should have been done by you, because you pronoun ऐसा है that it doesn't change from active to passive. So hope modals वाला structure is also clear to you. Now talking about infinitives. अगर sentence में infinitives है, the present infinitive to प्लस V1 का स्ट्रक्चर है, सो इट विल बी चेंज टू टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. डोंट गेट कन्फ्यूज विद द रूल्स. लेट अस सी द एग्जाम्पल्स एंड क्लैरिफाई योर कन्फ्यूजन्स. यू हैव टू डू इट. ठीक है, प्रेजेंट इन्फिनेटिव है ना इसमें, टू, और उसके साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डू. ठीक है, सो यू हैव टू डू इट. क्या करेंगे आप? इट्स, इट एक ऑब्जेक्ट है, क्या करना है उसे? इट. तो इट को ऑब्जेक्ट को सामने ले आएंगे. इट, अब ये हैव था, क्यों हैव था? बिकॉज ये यू के साथ लगा हुआ था. बट व्हेन वी आर ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड, इट आगे आ रहा है, तो इट सिंगुलर होता है. सो यू विल नॉट राइट हैव, यू विल राइट हैज़. इट हैज़. नाउ व्हाट वाज द स्ट्रक्चर? ऊपर टॉप में मैंने बताया था, टू बी और पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो इट हैज़ टू बी, डू का थर्ड फॉर्म, डन. इट हैज़ टू बी डन बाय, यू का यू ही रहेगा, बाय यू. यू विल हैव टू डू दिस वर्क.
You will have to do this work. तो this work से start करते हैं. This work. अब will क्यों आया? Because it's future. Will have to be done. To be done. To वाले structure में to be लगाना ज़रूरी है. To be के बाद third form. This work will have to be done by you. Now talking about the next type of structure in the same kind. When the sentences that begins with it is time to, it is to be changed like following rule. अगर sentence start हो रहा है it is time to ring the bell या it is time to learn English, so आप कैसे change करेंगे into passive? We will start it is time तो हम लिखेंगे ही plus we will add for plus object plus to be plus past participle. Don't get confused with the rule. Again I have the sentence examples. It is time to ring the bell. Now let us add these rule structure here also. It is time. So I will again write it is time. Now their example and their rule was telling us to add for. अब हमें for add करना है. So it is time for. Object क्या था? The bell. It is time for the bell to be. I have written to be. Ring. Ring का third form. Rung. It is the time for the bell to be rung. It's so simple. When you will move step by step using the structure, it will be definitely easy for you. Second example. It is time to learn English. It is time starting में same रहेगा. It is time and then for लिखा था मैंने, so I will also add for. It is time for English to be learned. Hope it is clear. Now sentences में sometimes girls there are two objects. Ditransitive भी होते हैं objects. Direct object भी हो सकता है, indirect भी. दोनों objects हो सकते हैं in the same sentence. It can be either a direct object or indirect object that can be used as a subject. आप दोनों में से किसी एक को use कर सकते हैं as a subject. हम लोग change करते हैं position. We change the position of object and subject. सो यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड एनी ऑब्जेक्ट. या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ला सकते हैं और इनडायरेक्ट को भी. कैसे? लेट अस सी. आई टोल्ड हिम अ स्टोरी. यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स है. क्या टोल्ड किया है मैंने उसे? स्टोरी. स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सेकेंड ऑब्जेक्ट किसको सुनाई है स्टोरी? हिम. सो हिम इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है. अ स्टोरी इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो now firstly what we will do, I will bring the indirect object forward. him को अगर मैं आगे लाऊंगी it will become he. ठीक है. he से अगर मैं start करूंगी, अब मुझे बताइए I told which is the kind, it is simple present past. I told. so past simple past का क्या रूल था? was word लगाना है. so if I am bringing he, अगर मैं him को आगे ला रही हूँ and it is becoming he, तो he के साथ क्या लगेगा? was या word? was. he was ऑलरेडी थर्ड फॉर्म टोल्ड. क्या टोल्ड किया था? ही वॉज टोल्ड क्या? अ स्टोरी. तो अ स्टोरी लगा देंगे. देन बाय. किसने सुनाई थी स्टोरी? बाय आई. आई नहीं लिखते हैं हम लोग. व्हाट वी राइट? बाय मी. ठीक है. ही वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी. बट अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड लेकर आती हूँ, इफ़ आई ब्रिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था मेरा? अ स्टोरी. अ स्टोरी वॉज टोल्ड. थर्ड फॉर्म टोल्ड. किसे सुनाई थी मैंने? टू हिम. A story was told to him. किससे सुनाई थी? By me. So remember, you can do it in both ways. You can bring the direct object also and the indirect object also as the main subject. She gave me a book. क्या दिया है? A book. So book is a direct object. किसे दी है? Me को दी है. Hence it is indirect object. So पहले हम indirect से start करते हैं. Me जब change होता है it becomes I. सो आई, मुझे क्या दिया गया? बुक. सो आई वॉज. गेव का क्या बनेगा? गिवन. इट इज़ ऑल्सो इन पास्ट टेंस, सो वॉज यूज़ करेंगे. आई वॉज गिवन अ बुक. बाय हुम आई वॉज गिवन द बुक? बाय शी. शी कौन होगा? हर. सो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर. बट इफ आई ब्रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा सेंटेंस? यस, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर. वेरी गुड. नाउ होप यू आर एबल टू चेंज द सेंटेंसेस. Not also talk about the interrogative, then we will complete the chapter. Talking about the interrogative sentences. See, there are two kinds of interrogative sentences. One is yes no answer type and another is WH question. Yes no में क्या होता है? You are asking a question and somebody will answer you in yes or no. आपको yes no में जवाब मिलेगा. Proper answer नहीं होगा. But in WH question type what happens? You have a proper answer. Like if I say who is outside the room,
who taught you English, and so on. आप properly answer देंगे. That is WH question. But if I say, do you like ice cream? You will say yes or no. So that is yes no question. So let us see the both kind of sentences how to change. They are also changing according to the tenses only. But firstly, you have to recognize the tense. Like, do you know him? डू यू नो, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, डू लगा हुआ है. सो सिंपल प्रेजेंट का रूल आपको इज एम आर से स्टार्ट करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट बिटवीन, यू विल स्टार्ट इट विथ इट. सब्जेक्ट, डू यू नो हिम, सॉरी, तो उसको स्टार्ट करेंगे तो इज शी नोन टू यू. ठीक है ना, नोन टू यू या नोन बाय यू, बोथ आर करेक्ट. आर यू बेकिंग अ केक, आर यू बेकिंग अ केक, व्हाट इज द टेंस? यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो अ केक जब आप आगे लेकर आएंगे, इज अ केक, देखिए बीइंग क्यों लगाया मैंने, बिकॉज इट इज कंटिन्यूस. इज अ केक बीइंग बेक्ड बाय यू. डिड शी पनिश देम, डिड लगा है, दैट मीन सिंपल पास का रूल लगाएंगे. वॉज वर्ड से स्टार्ट करेंगे. वॉज वर्ड किसके लिए यूज करना है हमें? देम इधर आकर क्या बनेगा? दे. वर्ड दे पनिश्ड बाय हर, शी का हर बन जाएगा. हैव यू डन द होमवर्क, होमवर्क आगे आ रहा है, दैट मीन्स हैव नहीं हैज लगेगा, होमवर्क सिंगुलर है. हैज द होमवर्क बीन, वाई आई एम एडिंग बीन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. बीन डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क. इट्स सो इजी ना. Talking about WH question, who taught you? Remember, whenever the question WH question begins with whom, it will be changed into by whom. Start with by whom. Now, by whom? You tell me who taught. Which kind of the tense it is? Simple past. So what you will do was, यहाँ word लगाना पड़ेगा आपको. By whom were you taught, क्योंकि you के साथ हमेशा were लगता है. By whom were you, third form is taught, question mark. When do you sell your car? When से ही start कर देंगे क्वेश्चन को, because it is WH. When, अब your car जब आगे आएगा, so it is singular or plural? It is singular, and the sentence of question is in simple present tense. So what you will do? When is your car sold by you? Question mark. You will use the rule of simple present. Why are you baking the cake? A cake, sorry. So what you will do? Present continuous है. सो वाई से ही स्टार्ट कर देंगे. अ केक जब फॉरवर्ड में आ रहा है, सो इट इज एम और आर, क्या लगेगा? इज. वाई इज अ केक बीइंग, डोंट फॉरगेट बीइंग, बेक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. व्हाट हैव यू मेड, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. वेरी गुड. नाउ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट हैज बीन मेड बाय यू, बिकॉज इट इज सिंगुलर तो मैंने हैज यूज किया है. व्हाट हैज बीन मेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. So hope after this video you have been clear with all the rules how to change a sentence from active to passive voice, whether it is any kind of tense or whether it is imperative, it is interrogative, or modal verbs are used, whatever is being used. Hope now you are able to do it easily to change into passive voice. Okay, do watch the video more and more times to get best out of it. Till then, goodbye. Thank you. Take care.